Hi Milind. Sorry it took me a long time to get to your portfolio and resume. It's time now. So I will start. First of all, thank you for reaching out to me and requesting for your review, which I will do graciously. All right, so we'll start with your LinkedIn. Building better web experience, full stack this, like what you have there. This is the website you're building. I'm assuming your portfolio link. Okay. So looks like you're reposting other people posts. So understand, more you repost, more it will take over your feed. So if somebody is coming to your profile to see what you do, they will see the other people post. So be mindful of that. If you want them to see what you have to offer like this, then be conscious about how many reposts that you're doing. So you're changing the HTML on the fly. Implement the following function. I like it. Great read. So what I see that your profile is mostly technical with some fun, with some repost. Cool. I like your banner. I like your highlight and how you have added two hyperlink in your profile. So that's great. Let's jump into the portfolio. Nice. Okay. I'm highly skilled software. So after the fanciness, the moments, next thing is to see actually what you have written. So a highly skilled software engineer, Dhanbad. Not sure why you're saying this. Is it only for a startup? Wealth of experience in crafting innovation solution for a startup. So it seems like you're only targeting a startup. I don't know if that's the case. All right. Great contributions all over the place. So great. Interested in this. Interesting. Nicely done. I'm curious to know how many meeting you get through this. The implementation is amazing. I love it. All right, you have LinkedIn, this, and you have a blog there. So great. So far, so good. I'm going to jump into the next hyperlink, which is your resume. I want to see if this goes to the same place. This is CV and this is resume. So there's two different links, and then third one is here. Okay, so this is your formal resume. This is your web resume, and then you also have a resume here. I think it wait, you also have a resume here, which is like Google Drive, and then this. Now let's see if this and this match. They do. I think they do. Okay, fine. So I'm looking at three different resume.
I'm sure you have a need for that. Where do I start? So I start with this one. Most of the people are on your portfolio site. So let's start there. These are just the timeline. Okay, got it. With a hyperlink to where this should go. Okay. And I'm gonna go to this one next. Two years of software experience with next. I mean, this is amazing. You should be able to get a job anywhere you want with that type of experience. Obviously, you have to go through all the interviews, application, networking, and everything. Wow. You hired and led a team of 4 engineers. Lead software engineer. Okay. And then before that, it was build a location as service. Platform to monitors tag in the anchor fit environment. Build a location, build this. So I see, I mean, it is impressive what you have done. So you highlighted your contribution. What I'm missing is what was this for? How big this project was, or how this application was. So give some idea there. And what was the result of this MVP? So you built a recruitment platform, and what happened then? It was an MVP. What happened then? So I guess you're still working on it. It's January. Similarly here, you built a platform fill in the anchor fill environment. There is some information there, but I'm not able to grasp what it was, why you guys built it, and what was the effect of this particular project, or whatever you've done. And also I'm not seeing the contribution that you have made to specific to this project. So adding that, whether it is a module, whether it is a design, whether it is coding, whatever you've done, some kind of a glimpse that tells me that how deeply you was involved, what was the technical growth that you may have seen with this job, something like that. And there is a project. So let's quickly compare, or I'm gonna see if more information here. I think I'm almost like, I know it will be double work for you, but if you are keeping the 3 resume, and I'm sure there will be one in LinkedIn as well, I'm almost feeling like you have to bring some of the information from here to this, right? Because you're sharing that, right? You the person who is visiting your portfolio, or wherever you have these hyperlinks, they may or may not see all the places like I'm doing, right? They may just see this and assume that that's all you have, and then they might click one of the links. So my point is, if this is just an experiment, I understand, but this is how you're going to keep, then you definitely want to match them. Now you have your about us. And led a team in previous role.
I like this one. I like this one as well. They're similar. They're different wording saying the exact same thing. This is more concise, and I think this is more relatable. All right, let's go here. All right, when you're saying popular job boards, I think you probably want to write in the bracket what some examples. I don't know what popular job boards are. Are you talking LinkedIn? Are you talking Naukri.com? Are you talking about Indeed? लोग बद्दुआएं देंगे तुमको इसके लिए. Implement an efficient job posting, candidate selection, develop recruitment pipeline. Okay, these are all great. I like to see some. So most people write about technical stuff and they don't write about something that business people can understand, non-technical people can understand, but you have done that. Now I'm missing some of the technical flavor. Like, yes, I get it. You built all this, but what technically you've done? Did you write a front end? Did you write a back end as well? Some kind of API services, microservices, something. So give me a flair, some insight of what technology looked like. Because in this here you did write design and build an MVP, hired this, and you have listed the technology, but you didn't say. I think this gave enough idea, but at the same time, I think there may be a way for you to write the technical involvement or what you did. And here, you didn't even write the technology that you used here, right? Okay, so I see something is missing in this case. You didn't write what this application does, but I get an idea that you hired a person, you built an MVP, you use these technology. I think there is a scope for writing the technically how you did what you did, what was the architecture, maybe something. And then here it's all business, but now inside about what technology that you have used, that you've listed here actually, and what was your technical contribution to this. Well, you written the technical contribution. I'm just saying that it doesn't give me technically how it was made. Okay, moving forward. And also, I also think it's a lot. Content is a lot. One other thing that I'm noticing, you're offering a lot of things, where you're offering that you're a team leader, you can lead other people. You're offering yourself as a developer. You're offering yourself as somebody who understands the business domain and application, because the way you have written all these, it's someone who is SME, subject matter expert, would have that kind of detail, right? So you also giving that aspect. And now I'm seeing that you also pitch for venture capitalist, but then pitching the startup hire to multiple venture. So you participated in that as well. Finish development, this for a startup hire. Finish developing the MVP with contributing the success of the.
Hired, key role in a startup, hired MVP. Um, I'm thinking that may be the reason you said in your resume or somewhere. How do I go back, man? How do I go back? Okay. I would expect a home here. You just found a real test by a user. I couldn't figure out where to go, how to go back home. So I think that's probably why you have written startup. Okay, let's see. I'm gonna go to the next one. Crafted portal. Hardware. Portals implemented robust file management flow, plan processing. iOS implemented. I do see there is a mix of business language and technical language here, which is what I was suggesting in the other one as well. Here you give some insight about what you're doing and how you're doing, right? So this is April, May, June, so like 2-3 months. Okay. All right. This is almost a year. Okay. All right. Ming Chai Tong, Taiwan. किया क्या है? शॉर्ट टर्म यूर रिसर्च स्कॉलर नेशनल, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन. ए हाई फाइव, मेरा भी वही है एग्जैक्ट. बैंगलोर इंडिया लैंग्वेज फ्रंट एंड प्रोजेक्ट एक लिखा है. अरे भाई इधर सब प्रोजेक्ट की उनको डालो ना यार. इसमें जो मोस्ट पीपल के पास में प्रिंट आउट होगा, सो ये शायद डालना चाहिए पूरा हाइपर लिंक लिंक्डइन का. सो वो एक बार देखो. जब इंटरव्यू ले रहा है कोई तो टिपिकली प्रिंट आउट रहता है. बट एनीवे दे कैन गो हियर, टाइप दिस एंड देन कैन गेट ऑल द अदर हाइपरलिंक्स. ऑलराइट, सो रिज्यूमे हो गया, ये पार्ट हो गया. वापस इस पे जाते हैं. सो ये है ना, ये प्रोजेक्ट सारा बना के रखा हुआ है, तो उसको डालो ना इसमें. इस पे क्यों नहीं डाल रहे हो? काम ही नहीं कर रहा. तुम्हारा सारा क्रेडिटेबिलिटी यहीं पे खत्म हो जाएगा भाई. नो रिजल्ट फाउंड. क्या चल रहा है यार?
नेटफ्लिक्स, टेस्ला, चलो ये सब बकवास है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्टअप हायर। भाई तुम एक्चुअली में कुछ काम कर भी रहे हो क्या? क्या आपको क्या है ये? एम्प्लॉय, whatever, let's keep going. सो ये तुम्हारा वर्सल पे जो साइट है इसका तो कोई फंक्शनलिटी दिखता नहीं है, तो लेट्स गो बैक। ये हुआ शॉर्ट टर्म रिसर्च एडवाइस, लोटस कनेक्ट, दिखा। अरे कुछ तो अंतर है इधर, यहाँ पर तुम्हारी 1 2 3 है, यहाँ पे अच्छा ये रिसर्च था, फिर उसके बाद लोटस कनेक्ट पे 2 लाइन क्यों है? दिसंबर फ्रंट एंड डेवऑप इंजीनियर, ओके ठीक है, इंटर्न बने और इंटर्न के बाद ये बने, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सितंबर से जून तक हो और यहाँ पे भी सितंबर से फरवरी तक हो। सो ये मिसमैच है, देख लेना भाई, है ना? राइट, प्रोजेक्ट पे जाते हैं। प्रोजेक्ट 1 लिस्टेड है, ये हो गया मेन मॉडर्न स्टैटस वेबसाइट कंसीडर डॉक्स रिलेटेड टू कोहोर्ट which is split into week wise sessions. ओके सो यहाँ पे कोहोर्ट है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, सेम चीज़ की हाइपर लिंक है, नहीं ये कोई और हाइपर लिंक है। ये तो कोई और बंदा है भाई, तुमने तो कोई कोर्स किया था ना, है ना? ओके वापस आओ, ठीक है समझ गया। तुमने एक कोर्स किया और उसके यहाँ पे ये लिस्ट बना दी और इसमें से पहली लिंक नहीं चली। दूसरे पे जाओ, दूसरी लिंक इंट्रोडक्शन पे जा रही है, तीसरी लिंक किस पे जा रही है? किया क्या है? ओके किडनी निकलवाओगे तुम लोगों की? सॉरी। ओके सो पोस्टमैन बेसिक, सो इट सीम्स लाइक तुम्हारे नोट्स हैं, डॉक्यूमेंट हैं, क्या है जो भी है, इसमें क्या तुम्हारा डेवलपमेंट है? ये तुमने डेवलपमेंट बनाया है इसके लिए, ये तो कोई ब्लॉग साइट जैसा नहीं लग रहा। ठीक है ओके ऑलराइट, इसको नई विंडो में ओपन करा दो। सो ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हो गया। मैं तो बोलता हूँ तुम्हारा ये जो है ना, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वो भी डालो उसमें। उसमें तुमको एक स्क्रीनशॉट और अगर तुम्हारे पास गिटहब का लिंक नहीं भी है तो स्क्रीनशॉट तो डाल ही सकते हो, राइट? और अगर लॉगिन वगैरह नहीं दे सकते हो तो एक छोटा वीडियो डाल दो। ये देख लिया है ना, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो तो ओके। सो
भाई मुझे क्यों न्यूज़ पढ़नी, तुम्हारे इस पे जाके मैं न्यूज़ क्यों पढ़ूंगा, हटाओ इसको। तुमको चाहिए वो तुम्हारे पास रहे, राइट, तुम्हारी साइट पे, यहाँ से तो तुम दूसरी जगह भेज रहे हो उसको। ये सब पोर्टफोलियो में नहीं चाहिए भाई, अनलेस तुम शो ऑफ कर रहे हो कि कैसे तुमने ये सब रिट्रीव किया है। इसका एक अलग से बना दो साइट, देखो और उसको डाल दो पोर्टफोलियो में। बट इसमें लगता क्या है यार, दो लाइन का तो कोड है। चलो अभी तो ये हो गया, ठीक है, तुम्हारा ये सारा देख लिया अपन ने। अब ब्लॉग, ये ब्लॉग कहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लॉग इसी के अंदर है। Type of software engineers, who you are, engineers, platform engineers, application engineer, what do you do? I like it. This is so true. This is the mindset. और इसीलिए जब हम डेवलप करते हैं हमारे सारे टेस्ट पास होते हैं, बिकॉज हमारा टेंशन रहता है कि हम उसको जो हैप्पी पाथ बोलते हैं उसको वो पूरा का पूरा फॉलो कर पाते हैं। ये जब बंदा आता है ना तो इसका तो शुरू से ही रहता है कि अरे छोड़ो, हैप्पी पाथ हटाओ, अपने को तो तोड़ना है। ओके ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। सो ये हो गया ब्लॉग में। मुझे एक जगह और देखा है तुम्हारा ब्लॉग, अभी तक अपन ने ना दो तीन चीज़ें देखी नहीं है। तो ये ब्लॉग हो गया, यहाँ पर जो हाइपर लिंक है, लेट्स गो टू लिंक्डइन फुल स्टैक डेव। अबे ओके, यहाँ पे कुछ और लिखा है ना तुम्हारा, बाकी रिज्यूम में है सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिस टाइपस्क्रिप्ट दिस एंड देन अपना इसके अंदर भी अबाउट सेक्शन में जाते हैं तो तुम्हारा ये सब है। लिंक्डइन पे थोड़ा एकदम अलग है ना। फ्रीलांस जनवरी से अभी तुम फ्रीलांस हो, तो ये शायद कॉन्ट्रैक्ट तुमने बताया था ना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया एंड ऑल। रिसर्च असिस्टेंट लोटस का अपन ने देखा था। तुम्हारा अच्छे से मैच कर रहा है, डेट्स तुम्हारी अलग लग रही है यार। ये सितंबर था उधर, और यहाँ पे जून तक काम किया है तुमने, सितंबर से जून में काम किया है। यहाँ पर तुम्हारा सितंबर से फरवरी में काम किया है, और यहाँ पे भी सितंबर से जुलाई में काम किया है। ये तुम्हारा अलग अलग कैसे चल रहा है यार। यहाँ पे तुमने सितंबर की जगह जुलाई है, और यहाँ जून है, तुम्हारा हर जगह अलग है यार। बता इससे क्या होता है। इससे देखो, मैंने ये चीज़ देखी, प्लस तुम्हारा जो वो प्रोजेक्ट वगैरह दिखे, राइट, और जो कंपनी का साइट ही नहीं है एंड ऑल, डाउट होता है। तो ऐसा डाउट तुम्हारा जो भी तुमको हायरिंग मैनेजर है, जो भी रिक्रूटर है, उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए। सो कीप थिंग्स सिंपल एंड कंप्लीटली इन सिंक, ठीक है। यहाँ पे भी तुम्हारा रीपोस्टिंग काफ़ी है, विच इज़ फाइन, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। बट फिर मुझे ये नहीं पता कि, मुझे ये पता तुमको ये सब तुमको सब ये पसंद है, बट आई एम नॉट एबल टू गेट व्हाट यू रियली वांट टू से। लाइक दिस इज इन 5 ईयर, ये है तुम्हारा, ये दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू शो। अब उसमें वापस ही आ गया, क्या क्या आ गया पता नहीं। ओके, आई थिंक मैंने तुम्हारा एक सर्टिफिकेशन देखा। सो ये, हाँ, तो ये सब चीज़ें दिखेगी नहीं ना किसी को,
इतना सारा हो तुम अगर उसको करोगे, दूसरों का पोस्ट करते रहोगे तो। ओके सो अभी हम कहाँ पर हैं, ये कर लिया, ये सारा कर लिया, ब्लॉग पे गए थे, फिर यहाँ से लिंक्डइन पे गए थे, यहाँ से अब अपन इस पे चले जाते हैं रियल क्विक। धासु रियली गुड इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा है। यहाँ तुम्हारा वो है, तुम्हारी सारी हाइपर लिंक है। मिलिंद मिश्रा, ये एक्स का लिंक हो गया भाई, तुम्हारा यूट्यूब वीडियो भी है, सही है भाई। बहुत पहले से, वेट ये कैसे होगा, 6 दिन तो मैंने, ओके रिज्यूम डाउनलोडर स्क्रिप्ट, अरे ये अभी So मेक hi everyone. कनेक्ट। I am just sharing this video of a real time. Can you give it like something like it's a so of a real time resume download every time I make changes to this Google Doc. So I have this nice little URL. I'm using Node.js for all of this. ओके ऑलराइट लेट्स गो। काफ़ी समय हो गया, लंबा वीडियो हो गया यार। अरे एक नया लिंक मिला तुम्हारा, बढ़िया। ऑलराइट लेट्स गो बैक। हो गया था ना, हमने गिटहब पे आए थे हम लोग, यहाँ पर ये सब है। रिपोजिटरी में 175, ये वाला है DSA बूट कैंप, ये वाला एक वेबसाइट हो गया, बैक एंड नोट्स। ओके इसका देख ही लो कोड भाई। क्या ऑलराइट भाई, आई थिंक आई एम डन। सो हमने ये, यहाँ से शुरू हुए थे, ठीक है मिलन। सबसे पहले अपन गए थे इसमें और ये देखा था। सो दिस इज़ ऑल गुड, ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जो काफ़ी सारे रिपोस्ट है उसके बारे में बात किया। देन फिर हम लोग इस पे गए और ये गए, तीनों को साइड बाय साइड ओपन करके कंपेयर किया। तुम्हारा अबाउट अस सेक्शन पे यहाँ पर कुछ तो डालो यार। एवरीबडी इज सो हैबिचुअल टू सी होम बटन और समथिंग, तो होम पे जाने के लिए मैं तो बहुत टेक्निकल बंदा हूँ बट मैं स्टक हो गया, राइट। एंड देन तुम्हारे प्रोजेक्ट में यू शुड डालो इसका, और यहाँ पे जो भी बनाया है तो आई थिंक एटलीस्ट लिस्ट होगा, उसमें एक स्क्रीनशॉट हो सकता है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन हो सकता है। मैंने अभी बाकी लोगों को जो रिव्यू दिए ना उसमें ये डाला था कि जब भी तुम ये बनाओ अपना प्रोजेक्ट का पेज बनाओ तो उसमें स्क्रीनशॉट डालो, और ये सीधे इस पे जा रहा है ना, उसमें स्क्रीनशॉट डालो, वहाँ पर एक लिंक डालो उसका लाइव डेमो का और एक गिटहब का। तुम्हारे पास वो तो सारे हैं ना, गिटहब भी ऑलरेडी है इसका, तो वो डालो। देन गिटहब पे भी वो सारी चीज़ें थोड़ी सी डालो उसकी, जैसे हमने देखा ना इसमें, यहाँ पर लैंडिंग पेज पे कुछ नहीं है, रीडमी फाइल पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बट तुम्हारा जो एक्चुअल पेज है यहाँ पर तुम्हारे पास कंटेंट तो ऑलरेडी है, तो वो थोड़ा उसमें डाल दो तो और अच्छा लगेगा, है ना। बाकी इन तीन का क्या इसमें सिग्निफिकेंट है मुझे तो समझ में नहीं आया। इट जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन आई फील। एंड एक और चीज़ देखनी थी मुझे, यहाँ पर जाते हैं मिलिंद शर्मा पे, कहीं तो देखा था तुम्हारा एक कोई ब्लॉग है कहीं, एंड आई कैन फाइंड इट एनी मोर। यहाँ पे तो ब्लॉग है बट कहीं तो और जगह पे ब्लॉग भी है, आई सॉ इट। दैट ब्यूटीफुल ड्रीम,
अबे अपना नाम ही डाल दो भाई, क्या तो है। ऑलराइट, सो मुझे तो नहीं मिला। सेम ही मिले ने, कहीं देखा था एक और हाइपरलिंक मैंने, बट एनीवे आई थिंक आई एम गुड। सी मैंने बोला था, मैंने देखा था, आई सॉ समवेयर, सो ब्लॉग डॉट मिलिंद लाइव, आई फॉरगॉट कहाँ पे देखा था ये, बट आई हैव सीन दिस। तो ये भी एक तुम्हारा ब्लॉग है, ओके। और यहाँ पर लेट्स गो टू दिस वन। This audio blog is powered differently by the language. Okay, type this is this. And note, न्यूज़लेटर भी है तुम्हारा, ओके। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये अपन ने उधर भी देखा था, हु यू आर, व्हाट यू डू। अच्छा है, लिखा हुआ है। आई मीन कंटेंट तो मैंने रीड नहीं किया, बट वट एवर इट इज़, अच्छा है, लिख रहे हो। PM2 हर एक को लिखना चाहिए, भले ही कैसा भी लिखो, हर एक को लिखना चाहिए। तो तुम्हारा ये भी ब्लॉग है, सीम्स लाइक दो अलग अलग प्लेस पे है, करेक्ट? यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है, विच इज़ अगेन फाइन। ऑलराइट, सो हाँ, मुझे ये देखना था और मैंने देख लिया, मैं फाउंड इट। इसमें क्या है, न्यूज़लेटर, सब्सक्राइब टू माय न्यूज़लेटर। चल भाई, मैं तुम्हारा न्यूज़लेटर, बट उसमें मुझे अभी टाइप करना पड़ेगा मेरा ईमेल, मैं बाद में कर दूंगा। आई वांट टू पब्लिकली शो माय ईमेल एड्रेस ना, एंड बाकी ये तुम्हारी हाइपर लिंक है। कितना कुछ करते हो यार, इंस्टाग्राम भी है तुम्हारा। बढ़िया भाई, बहुत अपडेट है। ठीक है भाई, ऑलराइट, आई एम डन। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। ठीक है मिलन भाई, आपको कोई भी फॉलोअप क्वेश्चन होएगा, कुछ भी होएगा तो मुझे मैसेज करो। कोई हेल्प चाहिए बोलना। ओवरऑल अच्छा है, आई थिंक कंटेंट सिंक करो, थोड़ा फोकस लाओ, लाइक एग्जैक्टली क्या ढूंढने का ट्राई कर रहे हो, किस तरह का जॉब ढूंढने का ट्राई कर रहे हो, प्लस तुम्हारा जो टीम लीडर का एक्सपीरियंस है, प्लस तुम्हारा वीसी के साथ में पिचिंग का एक्सपीरियंस है, लोगों को हायर करने का एक्सपीरियंस है, एसएमई का एक्सपीरियंस है, वो सारा मिक्सअप हो रहा है मिलन। और अगर मैं हायरिंग मैनेजर हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों हायर करूँ, राइट? अगर मेरे पास एक फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब है, जूनियर फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब है, तुम उसमें क्वालिफाई नहीं होते, तुम ऑलरेडी टीम लीडर हो, तो पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं। अगर मेरे पास एक टीम लीडर की पोजीशन है, उसमें तुम्हारा कहीं से कहीं तक एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसमें और अच्छे लोग मिल जाएंगे मुझे जो एक्सपीरियंस है। तुम्हारा वेबसाइट नहीं चल रही है, तुम्हारा प्रोजेक्ट जो था जिसके ऊपर तुमने टीम लीडर ये सब वीसी एवरीथिंग जो तुम पिच कर रहे हो ना, उसका क्रेडिटेबिलिटी पे ही थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है कि वो साइट ही नहीं चल रही तो कैसे होगा, है ना। तो मेरे मेरे हिसाब से वो थोड़ी सी चीज़ों को देखना चाहिए। सिंकअप करो, थोड़ा ध्यान करो कि किस तरह का जॉब अवेलेबल है और तुमको उनमें से किस पे पिच करना है ना। ये चीज़ें मायने रखती है। टीम लीडर, यस, तुमको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया एज ए टीम लीडर, बट जो एक्चुअल टीम लीडर का जॉब होता है और जो उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, उस प्लस जो एक्सपीरियंस उनको चाहिए वो दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, है ना।
और कहीं उसके चक्कर में तुम अपने आप को जो जो छोटी जॉब एज इन न्यू कमर्स का जॉब है, बिगनर लेवल पे जॉब है, जूनियर लेवल पे जॉब है, वो उसके लिए तुम मना कर दो और दूसरी चीज़ों के लिए तुम मिल नहीं पाए तुमको, तो वो वाली चीज़ों को थोड़ा सा देखो। मुझे लगता है कि तुम्हारा काम तो है, एंड उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चाहिए, प्लस उसके हिसाब से तुमको और थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कोडिंग में तुम किस तरीके से आंसर कर पाओगे, जो काम तुमने दिखाया है उसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड अगर मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो मोस्टली फर्स्ट 2 जॉब में से ही उनका इंटरव्यू लूँगा, और मैं तो घुस जाता हूँ उसके अंदर कि भाई अच्छा ये बनाया, एटीएस बनाया, तो चलो बताओ क्या बनाया, कैसे बनाया, क्या लॉजिक ला, लॉजिक किसने दिए, क्या कीवर्ड तुमको सर्च करने हैं, वो कीवर्ड आप डिफ़ाइन कर सकते हो या नहीं डिफ़ाइन कर सकते हो, ये फिक्स है क्या, हर जॉब के लिए अलग अलग होगा, तो वो इनपुट कैसे होंगे कीवर्ड, फिर तुम्हारे कोड में तुम उनको कैसे रिट्रीव करके कैसे मैच कर रहे हो, क्या लॉजिक लगा रहे हो, वो कैसे उसमें सब कुछ हो रहा है, राइट। तो वो एक पूरा का पूरा मेरे दिमाग में आएगा, प्लस उसमें जो जॉब सर्च है, तो वो जॉब इनपुट कैसे हो रहा है, तुम्हारा सर्चिंग कैसे काम कर रहा है, एप्लीकेशन कैसे काम हो रही है, तो बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। मैं तो कोई भी कोई फीचर लेके आई विल गो रियली डीप, एंड देन फिर देखूंगा उसमें से कितना तुम्हारा काम है नहीं है, क्लियरली पता लगता है। विद इन लाइक फर्स्ट 2 मिनट में सब कुछ पता लग जाता है कि किस बंदे ने कितना काम किया है ना। तो उतना लिखो जितना तुम सपोर्ट कर सकते हो, और बाकी जितने भी मैंने जो इनपुट दिए ना वो कर लो, एंड आई विल विश बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलो बाय फॉर नाउ।